तो आई what my thought process was that ये सब देखने के बाद आप में से कितने लोग समझते हैं कि ये शायद ही जो है ये एक ग्रोथ स्टोरी है या शायद ही एक सक्सेस स्टोरी है? मैं नहीं मानता हूँ। For me, it is not a growth story or a success story. For me, it is a story of building trust. It is a story of inspiration, and it is a story of passion. So TIP मतलब टिप बनता है ना, and this is nothing but the tip of the iceberg. इसके नीचे और भी हैं virtues. There is a sense of belongingness in the members. क्योंकि एक साथ जुड़ जाते हैं तो अपनी जो भी दिक्कतें हैं वो बांटते हैं, जो needs हैं उसके बारे में जानते हैं. So you understand people better, and then there is the determination. Determination in the people who are leading, each one of them. Pramod sir, he was there all throughout, and see the passion with which he has taken us and shown us. We are all from the government and we have come to learn from private sector. Learn, they say learn from others, effective, those who have been doing it well. And our perception about, how the private sector work or how the FPOs work has changed drastically after seeing all this. Then you have also the persistence. Persistence मतलब लगातार लगे रहो, मतलब हम कहते हैं ना लगे रहो ना भाई. तो उस तरह का एक attitude, never say die attitude. I'll talk about that also later, but I say never say attitude, what actually should be implied from that. And then on top of all of this, if you see, they are basically dealing with horticulture. Okay, primarily they are dealing with horticulture. They are not concerned about how to increase your production, how to increase your productivity, or how to do some kind of an intervention so that 12 tons becomes 25 tons, nothing like that. They are working on simple principle of minimizing post-harvest losses. So we are producing around 345 million tons of fruits and vegetables. Praveen Pradesh sir told 40, it's around 30-40 range we use, depending on where it actually happens. Where you have good facilities, it is 20 also, but where you don't have good infrastructure, then it becomes 40 also. So even if you take 40, it is quantifying to around 100 million tons. And this 100 million tons is something which even Pakistan, Bhutan, Sri Lanka, they don't produce that much quantity which we waste. So we have to think from that perspective. Why should we actually now try to improve our productivity? We should first and foremost, our focus must be to cut these losses. Let us have a target of 10%. Reduce this. How much does it translate to? 10% translates to around 30 million tons. Because you can't have 0%. There will be some loss happening anyway because of some grading operational loss, some otherwise some transportation loss, some loss will be there. But what will be the extent to which we can reduce it? So that should be our focus. And secondly, what they have established here is without any dependence on government. That is what has impressed me. They haven't depended on government for SMAM subsidy or NHP subsidy. You see, every project they have put up, government has got a subsidy. I know this scheme, so I can tell NHP they can get capital subsidy for cold storage. Agriculture infrastructure fund is there. Under that they can get for the machinery also they can get, for the cold storage they can get, primary processing they can get, e-marketing they can get, IT they are working, they can get subsidy, intervention on that with credit guarantee. As an FPO, they can have several projects. There is no limitation to the projects to which they can get government assistance, but they have not taken anything. That is how they have built this empire, I can say. It's not, it's like Samrajyam they have built, you can say like that. And then for me, when it comes to, key learnings, I'll just summarize a few things. We always talk about, intervention of technology, introduction of technology, adoption of technology. For me, I've been speaking, in several forums, I keep telling them, for agriculture, today we need an IIT. Like IIT for engineering, we need IIT for agriculture, that is infrastructure, innovation, technology. If these three are set up and well connected and established, then you can demonstrate your might. And for IIT, when I say, this is not just merely linking up to the IT systems. It is like innovative, smart and precision agriculture strategies, drip irrigation you have. There you monitor correctly. And also how to optimize the use of resources. Water conservation. What you do through drip irrigation or sprinkler irrigation is water conservation. And water is a precious resource. Today in Delhi there is no water, drinking water, because of the Yamuna issue. Now people are realizing the importance of water and you are having floods and no water for drinking. See the strange phenomena. So what we should actually do is, and also when we talk about creating wealth out of waste, yesterday we have seen, even the peels, orange peels or the pomegranate peels, they are converting into money, that is adding value to the produce of the farmers. Every inch, every part of it, हम लोग जब कोई चखते हैं ना अच्छा सा स्वाद का कोई पकवान तो बोलते हैं स्वाद है ना उंगली चाट के खाना चाहिए. You should feel the every inch of taste.
Here what they are doing is giving value to the farmer for each and everything that they are producing. And that is something which has impressed me a lot. And then when we talk about technology, मैं अगर बोलूँगा किसी को टेक्नोलॉजी के बारे में, सर हम क्या जानते हैं, सर हम तो क्रेडिट वाले हैं, फिर दूसरा कोई बोलेगा हम तो हार्टिकल्चर वाले हैं, फिर तीसरा कोई बोलेगा हम तो पीडीएमसी वाले हैं. मैं आपको टेक्नोलॉजी के बारे में कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को बड़ा सिंप्लीफाई करके आपको बता देता हूँ, आपको जिंदगी भर याद रहेगा. You summarize the entire technology into ABCDE. You can apply anything there. A is artificial intelligence, okay, machine learning tools. Today, if you have to, you have voluminous data, you have to, scan something. It is not possible for the human brain to do everything, even Excel sheet. But you should understand how AI works, ML works. कितना लोगों ने आपने रजनीकांत का रोबो मूवी देखा है? उसने अगले दिन एग्जाम है, वो क्या करता है उसके ब्रेन में चला जाता है, पूरा स्कैन करके ले लिया पूरा और एग्जाम लिख रहे हैं. आप में से कितने लोगों ने करके एग्जाम पास किया? विश करके तो विश हो जाते हैं. तो दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पावर. एग्रीकल्चर में अगर हमको ये डेटा एनालिसिस करना है, कंपेयर करना है, प्रोडक्टिविटी, फिर उसके बाद न्यूट्रिएंट्स का राइट कांपो में आना है. अभी आपका ये बेस्ड सिस्टम हम देख के आए हैं फार्मर फैसिलिटी सेंटर में, बोले सॉइल एनालिसिस हो रहा है, साथ साथ रिकमेंडेशन आ रहा है, कहाँ से वो प्लग कर रहा है बेस्ड ऑन द प्रीफेक्ट. सो हमारा ब्रेन डेवलप करते करते आप लोगों को एक डिजिटल ब्रेन आपका डेवलप करना है आपके डिविजन में, which will give you that freedom to access that, benefit from it and implement, and you can have an impact on scale क्योंकि ह्यूज डेटा को आप डील करते हो. दूसरा बी, ब्लॉकचेन. ब्लॉकचेन इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी अक्रॉस द सप्लाई चेन. फार्मर से लेके जब फोर्क तक हो जाता है तो आपको पता है ना, कल आपने देखा था स्कैन करके कि ये कहाँ कौन से फार्मर ने उगाया, क्या है, क्या प्रोड्यूस है, क्या वैरायटी है, क्या रेट पे दिया. There is a transparency. It's a ledger system which is interconnected, and nobody can fiddle with it unless the authorized person actually does it, and he has to do the loading or the uploading and all as per certain protocols. उसमें ये नहीं होता है कि आज कुछ डाल दिया फिर कल चेंज कर दिया, कुछ ऐसा नहीं है. So that is a very transparent system, and we are working on several blockchain technologies in agriculture. We have to explore that. Third one is the C, and C stands for cloud computing. Again, analysis, or suppose I throw up a data today. Arvind sir was telling you, give all the financial data, they will analyze in 10-15 minutes. How is it possible? I need to very keenly go your balance sheet, what is your profit, what is your loss, and how much turnover, and what was the quantity. It's not possible. So big data analysis, all these things will happen through cloud computing. That is one technology that we have to definitely bring in agriculture. The fourth one is all your digital tools. D. डिजिटल टूल्स में आप कुछ भी ले लो, आपका डिजिटल सेंसर्स हो गए या डिजिटल वेदर स्टेशंस हो गए, ठीक है, लाइक डिजी आता सिंपल, सो मेनी एप्स आर देयर टुडे. एवरी स्टेट हैज गॉट एन एप्स. आई वेंट टू तमिलनाडु, आई सॉ एन ऐप दैट इज वाडगई मींस साइलेंट. सो इट्स you want tractor, you can have, you want some other machinery, you can have. It's an app you download. And yesterday we saw an app, that Setu app which you were telling about. What is it all about? Within 6 seconds, 7 seconds you are booking. Otherwise, you dial to everybody. That person may not lift the phone. You will not get the data. You will not get the information. But sitting in the comforts of your home, you are able to get that. So ABCD over. Now E is there. E is nothing but e-commerce, ONDC, email, eKYC, eNow. Any electronic tool that you have is also an IT. You develop today. eKYC was launched a few days back. Farmers can sit at their home and then do the eKYC for PM Kisan. How convenient it has become. Biometrics. So technology means technology should be coming from MIT or something. Nothing. We know everything. Just I've simplified ABCD. This is the technology. Try to implement this, and we have seen here how they are implementing technology, and therefore that should be the key takeaway for us. When we go back, we should see how we can integrate technology into our working, make the systems smoother, easier, and more importantly, transparent. Transparency is very important at each and every stage that you do. Then only you can regain the trust. Then we were all telling that seeing is believing. You can see, you can learn, you can perceive, and you can even get trained. But for me, what I learned is, when you come here, you can feel. Not just seeing, I have felt, goosebumps. When I saw the movie, there were goosebumps. I can feel the success, I can feel the story, I can feel the growth, I can feel the struggle, I can feel the transformation. So that feeling is important. You are giving that feeling, and that feel, everybody goes by the feel only. I say my gut feeling doesn't say good about this. Today there's a match,
इंडिया मैच है पाकिस्तान का, यार मेरा गट फीलिंग ठीक नहीं है, तो इट माइट टर्न आउट दैट वी विल लूज अ मैच, गट फीलिंग हमारा अच्छा नहीं है, बट हमारे पास कभी कभी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होता है, अरे हमारा स्ट्रॉन्ग है भाई, बहुत जबरदस्त है, उनका टीम का वो मेन स्पिनर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हम उसको पक्का मानेंगे, और दूसरा हमारे घर में खेल रहे यार, तो वो एक फील होता है, फील का इंपॉर्टेंस होना चाहिए। तो हियर आई कैन फील इन सह्याद्री दैट फील ऑफ हॉर्टिकल्चर वैल्यू चेन, दैट फील ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दैट फील ऑफ स्ट्रगल, feel of success. I can smell them. So that is the another key takeaway that I have got. And then of course there are so many things. I mean, I don't know, time permitting, I could also see the harnessing of the collective strength of coming together of farmers. That is something which we have been always telling, collectives. Aristotle, what he said, the whole is greater than the sum of its parts when you come collectively. अमिताभ बच्चन कहता है ना, एक से एक और एक 11, एक और एक 2 नहीं है 11, क्योंकि स्ट्रेंथ आपका मसल पावर इंक्रीज होता है। किसानों का भी पावर ऐसे ही है, आप उनको एक साथ कर लीजिए, उनके पास पूरा क्षमता है। सो व्हाट दे हैव डन इज टू हार्नेस द कलेक्टिव स्ट्रेंथ। नाउ व्हाट गवर्नमेंट हैज टू डू, यू कांट एक्चुअली काइंड ऑफ टेक द रिस्क लाइक दे हैव टेकन, बिकॉज यू डोंट हैव टू टेक रिस्क। हमारा तो ऑल सिक्योर्ड जॉब्स हैं, हमको क्या रिस्क लेना है? उन्होंने स्ट्रगल किया है, रिस्क लिया है, तो हमको क्या करना चाहिए? इन माई ओपिनियन, you have to learn from the farmers, learn from the FPOs, and we should play the role of an enabler or facilitator. इन्होंने जो कहानी हमको दिखाया उससे हम सीखेंगे, और इसी तरह का जो कहानी है वो बाकी किसानों को कैसे वहां तक पहुंचाएंगे और उनको भी सक्सेस की सीढ़ियों पे कैसे चढ़ाएंगे, उसके लिए आई शुड बी एन एनेबलर। सो दैट इज माई की लर्निंग। यहाँ पे वी शुड बी एन एनेबलर। गवर्नमेंट शुड नेवर गेट इनटू द बिजनेस, यू शुड एनेबल द बिजनेस टू फ्लरिश ऑन इट्स ओन। सो दैट इज द की टेकअवे। एंड ऑल्सो एज आई सेड, सह्याद्री ने जो रिस्क लिया है वो शुरू में आप देखोगे 2000 से लेकर लगभग 2011-12 तक स्ट्रगल ही था। वो रिस्क इतना था कि आपने देखा होगा, कोई भी उस परिस्थिति में रहता वो छोड़ के चला जाता, लेकिन वो छोड़ के नहीं गया। और एक और चीज मुझे सीखने को मिला वहां से, इनके स्ट्रगल में रिस्क है वो मैंने सीख लिया था, बट व्हाट आई लर्न फ्रॉम दैट रिस्क, एवरी टाइम दे लर्न अ रिस्क, दे मॉडिफाइड देयर स्ट्रेटेजी। वो गए थे वहां पे नेदरलैंड्स में, सीख के आ गए थे, तो उन्होंने बोला एक्सपोर्ट में अगर सिर्फ 4 कंटेनर करूंगा मेरा प्रॉफिट नहीं आएगा, मुझे किसानों को एक संघ बनाना है, तब भी जाके थोड़ा सा वॉल्यूम्स आएंगे और मैं प्रॉफिट देख पाऊंगा। उसके बाद दैट स्टोरी विच द्वितीय शेयर जब फेलियर हो गया, तो ही सेड आई हैव टू बिल्ड द ट्रस्ट। 6 करोड़ या 7 करोड़ के लिए मैं अगर पीछे हट जाऊंगा तो कल ये लोग मेरे साथ नहीं देंगे। सो उन्होंने वो किया। दैट इज ऑल्सो ए वेरी ग्रेट मोमेंट, डिफाइनिंग मोमेंट इन सह्याद्री's हिस्ट्री। So that is another learning for us. And if you don't have an appropriate strategy taken away from your failure, you can never succeed. So you have to develop a strategy. That is another thing. And then all those who have succeeded in the world, if you take, they always learn from their mistakes and they understand the ecosystem better. And the better the understanding of the ecosystem, the better is your success rate. आपने एक सिस्टम बिल्ड कर दिया है, so that is translating into success. एक हमारे गवर्नमेंट के लिए एक और चीज है, माननीय प्रधानमंत्री जी एक बार सेक्रेटरीज को संबोधित करते हुए, हम नहीं थे लेकिन सेक्रेटरी साहब ने हमको बताया था कि ही सेड दैट गवर्नमेंट का जो फंक्शनिंग है ना, वो एक बैनियन ट्री के नीचे जो काम करने वाले ना, शेड में ऐसा है, कंफर्टेबल शेड, हम लोग अपना काम करते रहेंगे, बट हम ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि हम सन को एक्सपोज नहीं हो रहे। तो वो कह रहे हैं थोड़ा वो छाया से बाहर निकलो, अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, धूप देखो, मुश्किल देखो, कठिनाई देखो, फिर आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और करने को भी बहुत कुछ मिलेगा। तो यू हैव टू गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। दैट इज अनदर लर्निंग दैट आई हैव एक्चुअली ऑब्जर्व्ड हियर। आई मे बी रॉन्ग, यू कैन ऑब्जेक्ट मी, यू कैन से सर ऐसा नहीं है, एक दिन में आपने इतना कुछ क्या सीख लिया। तो बट एवरी थिंग आई ऑब्जर्व, एवरीथिंग दैट आई नोटिस्ड, दैट हैज गिवन मी सम काइंड ऑफ अ लर्निंग इन माय माइंड व्हिच आई विल नेवर फॉरगेट इन माय लाइफ। When I go back from here with these insights, I will definitely apply them when I am doing some work, how we can interlink, because गवर्नमेंट का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है कि हमें फार्मर को सब्सिडी देके सपोर्ट करके छोड़ देना नहीं है, उसके जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसका पोटेंशियल के साथ मैच कराना है। दिस इज द पोटेंशियल। टुडे वी हैव एडवांटेज, जैसे कि यहाँ पोटेंशियल है, केरला जाओ पे कोकोनट आपका पोटेंशियल है, किसी और जगह चले जाओ मैंगोस है, रत्नागिरी या अल्फोंसो में वही एक पोटेंशियल है। क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम ये सब किस लिए हो रहा है? पोटेंशियल को आपका जो फार्मर्स का जो कैपेबिलिटीज हैं, जो अपॉर्चुनिटीज है एक्सपोर्ट को, उसके साथ मिलाना है। वो मिलाने का काम हमें सरकार से करना है। देयर इज अनदर डिस्क्लेमर, मेनी ऑफ देम सेड किसान के बारे में हमारा सोच अभी बदल रहा है,
यहाँ देखने के बाद कि किसान इतना गरीब नहीं है या फिर मतलब किसान का लाइफ कंफर्टेबल है. इट इज ए मिस्टेकन misnotion, I can say. You don't come to that conclusion because these people have built a system where the farmers could thrive well, perform well. But this is not an indication. This is an exception. अगर ये exception नहीं होता हम लोग क्यों आते हैं? This is something very rare, something very special, something very unique. That is why we have come here to learn. अगर हर जगह होगा तो हम बोलेंगे नॉर्मल है. जिस दिन वैसा होगा ना, हर जगह होने लगेगा ना, तब हमारा देश विकसित होगा. हर किसान संघ जो है अपने बलबूते पे करके जो आगे बढ़ेंगे और देश को भी बढ़ाएंगे. बिकॉज एग्रीकल्चर इकोनॉमी इज वेरी क्रिटिकल फॉर आवर ओवरऑल इकोनॉमी. सो देयरफॉर वी शुड नॉट चेंज आवर परसेप्शन अबाउट फार्मर्स जस्ट बाय कमिंग टू Sahyadri. We should only tell them the struggle they have gone through, the mistakes they have learned, and how they have built a system, ecosystem that has helped the farmers. Lastly, what I want to say is that हम लोग आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं. आत्मनिर्भरता है हमको. वी हैव टू बिकम आत्मनिर्भर भारत. वी डोंट हैव टू डिपेंड अदर प्लेस on outsiders and all those things. Sahyadri is the real story for Atmanirbhar Kisan. They have built a Atmanirbhar Kisan system here, which is a template for any FPO, for any FPC, for that matter for any farmer to adopt, emulate. And I must say my experience was awesome. I mean और भी है लिखने को बोलने को, बट समय की पाबंदी की वजह से मैंने जो संक्षिप्त में आपको बोल दिया है, इंक्लूडिंग दी hospitality that you have extended. Of course, I was put in a room which was very scary. But then आप लोगों ने शेयर को क्या सिंगम विंगम बोल दिया, तो I can't let you down. तो मैंने अपना करेज को थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के सिंगम जैसे वहीं पे सेट हो गया हूँ विदाउट रूम चेंज.